So basically we are starting with the measurement of flow, and today we are going to see that how basically a flow of a liquid or a gaseous substance can be measured, or we call it as a word fluid. Okay, so fluid flow is something which we are going to learn today. I hope you all are ready to learn about it. So give a heading in your notebook, measurement of flow. Now, in the measurement of flow, first thing we are going to understand, what do you mean by flow? Flow is basically called as the volumetric flow, or we can say that the volume of that liquid which is flowing or which is traveling, which is passing by per unit time. It means as per the volume, how much amount of liquid is going from one place to another place in a one particular time, say 1 second per second, 1 minute per minute, like that. So that we can say the unit of a volume of a liquid, say in liter, then the flow rate will be xyz liters per minute or xyz liters per second. So it considered as a flow. Okay, now when we are going to measure this flow, then one thing we have understood, that we are focusing on the time. Okay, we are focusing on the time. Now what do you mean by focusing on the time? First, when the flow has started and when the flow has stopped. But do you think it is possible to do always, to start a flow and to stop a flow and then measure? No, sir. ऐसा पॉसिबल है करना हर बार? So feasibility of this method is not recommended. Then we have to go for some other technique. So the first technique we are going to see, that is differential pressure mechanism. Now what do you mean by differential pressure mechanism? If we are able to create a differential pressure, now what do you mean by differential pressure? If we compare that in a 1 year ago and the difference of 1 year time frame, whatever the changes has happened in your height, then we are able to compare it with the time frame कि एक साल में मेरा height इतना इतना बढ़ गया. या फिर we started filling the tank, water tank, and after 5 minutes the water tank is being filled, or water tank is being, इतने इतने समय के बाद इतने इतने लीटर्स का पानी उसमें वो वाटर टैंक में चला गया. So now we are able to identify that particular change or that particular variation, okay, from start point and end point. Then we call it as a differential parameter. Okay. तो हमें पहले पता होना चाहिए कि टैंक में कितना लीटर पानी था, एंड एट द एंड ऑफ दैट एक्टिविटी वी आर गोइंग टू नो कि टैंक में अभी कितना लीटर पानी है, एंड देन वी कैन कैलकुलेट स्टार्ट कब किया था एंड एंड कब हुआ. तो इसके बीच में हमें टाइम का वैल्यू मिलेगा. Once you get the value of time, you can then divide it with the total amount of water which is being added in the water tank after the initial level which is available inside the tank. तो इसी प्रकार से डिफरेंशियल प्रेशर का काम होता है. और जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, दिस इज द डिफरेंशियल प्रेशर इंस्ट्रूमेंट. नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट वेयर वी कैन फाइंड the high pressure and low pressure terminals. Okay, now high pressure and low pressure terminals, or we can say sensor, because of which this can determine, because of using this orifice plate. ये क्या है? एक प्रकार से आप इसे क्या बोल सकते हैं? What you can call it as? Just type it in the chat box. Okay, so have you drawn this diagram? Draw this diagram in your notebook. Draw the diagram and let me know in the chat box if you are done with it. Okay, everyone done it? So now if we are looking closely at the image, we can say that this orifice plate type meter or orifice plate type instrument is employing the concept of measurement called as a differential pressure measurement. Now what do you mean by that? At this particular point, I will just show that with a laser pointer. Yeah, this particular point of this particular pipe. Okay, ये पाइप का अगर ये फ्लो है, ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो this will be considered as high pressure and this point will be considered as a low pressure. So why this has happened? Because जो भी normal flow था, वो normal flow आपके
ये ओरिफिस की वजह से, नो व्हाट डू यू मीन बाय ओरिफिस? इट इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर ओनली, बट इट हैज अ small inner diameter. Okay, small inner diameter. Now I will just show another image to you what happens exactly in it so that you can understand. If we talk about this image, here you can see that inner diameter, the person is measuring that inner diameter. Okay, and this plate is being placed here. यहाँ पे ये प्लेट रखा है उन्होंने, और इफ इस प्लेट देखा आपने, और एक पाइप का कंस्ट्रक्शन समझ में आया आपको? तो अभी क्या होगा कि अगर हमने ये फ्लो को अंडरस्टैंड किया, तो यहाँ पे जो स्टेडी फ्लो था, वो यहाँ पे ऑब्स्टेकल दिखने के बाद यू कैन इमेजिन दिस विद द ट्रैफिक ऑल्सो। ट्रैफिक का मूवमेंट, अगर कोई ऑब्स्टेकल है यहाँ पे और यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से हो जाता है। और फिर अगर हम स्पीड या फिर हमारे व्हीकल का वेलोसिटी देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा या फिर नॉर्मल वेलोसिटी रहता है, और यहाँ तक आने के बाद कम कम होते, यहाँ से फिर लोग निकलना शुरू करते हैं, तो इधर कम रहता है, फिर इधर से वापस दे कम बैक टू इट्स ओरिजिनल फ्लो। तो हमें देखना ये है कि ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे, जो ये ओरिफिस प्लेट के दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तो वहां पर एग्जैक्टली ऐसा कितना डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट होता है। And as per the constant of this orifice plate method, we are able to identify the discharge or amount of flow. तो जो quantity होता है, amount of discharge बोलते हैं उसको, उसको Q लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन से लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है? Q। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ओरिफिस मीटर में एग्जैक्टली ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो हमें, गिव मी अ मोमेंट, ओरिफिस प्लेट जो मीटर है उसमें ऐसा क्या चीज होता है जिसकी वजह से हम ये कंसिडर करते हैं कि प्रेशर डिफरेंस होगा। तो इसका एक विजुअल इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखने के बाद शायद आपको इसका आइडिया आ जाए। कैन यू सी दिस एनिमेशन? जहां पर ये पर्टिकुलर आपका ये जो स्मॉल डायमीटर जहां पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर यू कैन सी दैट बिकॉज ऑफ द दिस ओरिफिस प्लेट, ये जो ओरिफिस प्लेट है, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये इस प्रकार से मूवमेंट हमारे पाइप के अंदर होने वाला है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट यू कैन सी दैट दिस इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंशियल प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, कैन आइडेंटिफाई द फ्लो। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ये थोड़ा हम बोल सकते हैं ना, समझने के लिए हमें विजुअलाइज करना होगा ये किस तरह से काम करता है। बट यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस है, बिकॉज ऑफ विच वी कैन यूज दिस ओरिफिस प्लेट फॉर अ लेस एक्यूरेट रिजल्ट। जहाँ पे कोई एक्यूरेसी ज्यादा नहीं है, वहां पे हम ये ओरिफिस प्लेट, ओरिफिस मीटर यूज कर सकते हैं। और एक इसमें बात है कि अगर ओरिफिस प्लेट जहाँ पे लगाया है, वो पाइप में से फ्लो होने वाला लिक्विड अलग अलग फ्लो रेट से क्या होता है, वेरी होता है। मतलब नाउ इफ वी यूज दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ओके, मतलब जहाँ पे ऐसे प्लेट हम फ्लो के बीच में लगाएंगे, तो हमारे नॉर्मल जो फ्लो है उसके पैटर्न पे इफेक्ट होगा। एंड बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप। जो प्रेशर यहाँ पे होगा उससे कम यहाँ पे होगा। इट मीन्स देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द our meter, and because of which you can see that this kind of instrument is useful only where there is a little what you can say, मतलब उस पे ऐसा कुछ लिटिल चेंजेस आए मेजरमेंट पे तो भी चलता है। ऐसे वाले जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। लाइक हाई विस्कस लिक्विड जो होते हैं या स्लरी होती है, वहां पे ये टाइप के इंस्ट्रूमेंट हम मेजर कर सकते हैं। नाउ दिस काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन इज also associated with some parameters that where we should install this orifice plate। ये जो orifice plate आपको दिख रहा है, वो हमें फ्लो में कहाँ पे लगाना चाहिए, उसके लिए उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स को कंसीडर करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका फ्लो डायरेक्शन। फ्लो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें इसे इंस्टॉल करना है। सेकेंड है उसका जो फ्लेंज का साइज है। देन मेजरमेंट ऑफ बोर, इसके अंदर कितना बोर, मतलब ये जो पर्सन यहाँ पे मेजर कर रहा है, ये इनर डायमीटर उसका कितना है, मेजरमेंट ऑफ बोर। एंड देन द डायमीटर ऑफ दिस पाइप, ये जो पाइप है जिसमें से फ्लो, आपने देखा होगा कि अगर आप शिलफाटा रोड से या फिर वाशी के साइड से अगर मुंबई ट्रेवल करते हो, तो कितने लोगों ने वो ब्लू कलर के बड़े बड़े पाइप्स देखे हैं साइड से जाने वाले? हैव यू सीन देम? यस सर। एक दो लोगों ने ही देखा है क्या?
सो उन बड़े बड़े पाइप्स के ऊपर आपने ये टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा जहाँ पे दो पाइप वहां से निकाले गए हैं और उन दोनों के बीच में काफी बड़े बड़े नट बोल्ट्स लगाए रहते हैं। सर वो जो ब्लू वाला सर्कल है उसमें एक ये रहता है ना, मीटर रहता है ना, जिसमें इंडिकेटर दिखाता है। हाँ, मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे उतना बड़ा तो पाइप नहीं दिखा रहे हैं, बट आई विल शो यू। आपने उसमें देखा होगा, मतलब जो वाटर के जो पाइप्स रहते हैं उसमें आपने देखा होगा। हाँ, मिल गए। आपने ऐसे टाइप के पाइप देखे होंगे ना किधर किधर रोड के बाजू में वगैरह। यस सर। तो ये टाइप के स्ट्रक्चर में ये देखो, यहाँ पे एक ये है, क्या बोल सकते हैं हम, एक आउटलेट है, यहाँ पे एक आउटलेट है और बीच में एक वॉल है। तो बेसिकली ये टाइप के कंस्ट्रक्शन को आपको इमेजिन करना है कि ये बीच में जो है, दिस इज अ ओरिफिस। मैं आपको और दिखाता हूँ इसको, ये किस तरह से दिखता है। ये देख, ये आपका पाइप है, फ्लो है। ये दूसरा पाइप है, ये इसका फ्लेंज है। ये जो यहाँ पे हम लोग नट बोल्ट लगाएंगे उसको फ्लेंज बोलते हैं। ओके, ये फ्लेंज है और यहाँ पे आपका ओरिफिस प्लेट है। तो यू कैन सी ओरिफिस वो पर्टिकुलर फ्लो के कंपैरिजन में कितना छोटा होता है। कैन यू सी दैट? सो इट इज एज गुड एज आपका जो फ्लो है उसे उसने क्या किया है, कम किया है इमीडिएट बेसिस। उसके बाद डेफिनेटली वो फ्लो बढ़ जाएगा, बट उस समय पे उस जगह पे फ्लो जो है वो कम हो गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। बट क्या है कि इसमें हमारा एक्यूरेसी कम है और काफी ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है इसमें। तो इससे इससे प्रिवेंट होने के लिए या फिर इससे थोड़ा एडवांस होने के लिए वी आर यूजिंग द डिफरेंट मैकेनिज्म कॉल्ड एज अ वेंचुरी ट्यूब मीटर। और वेंचुरी ट्यूब मीटर विल गिव यू अनदर नेक्स्ट एडवांटेज कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मेजरिंग बिफोर एंड आफ्टर, जहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है इस जगह पे, ये क्यों नहीं दिख रहा आपको? अच्छा, ये मैं शेयर नहीं किया। ओके, जिस तरह से ये प्लेट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओरिफिस प्लेट के बिफोर एंड आफ्टर हमारे सेंसर्स या हमारे जो प्रेशर मेजरमेंट मैकेनिज्म है वो लगे हैं। ये वेंचुरी ट्यूब में क्या होता है, वेंचुरी ट्यूब में क्या होता है कि वो उस जगह पे ना होते आफ्टर एंड बिफोर, जहां पे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उसी जगह पे ये क्या होने वाला है, आपका मेजरमेंट होने वाला है P2 का। सो P1 इज डेफिनेटली हायर वैल्यू, P2 इज लोअर वैल्यू एंड वी हैव अ K एज अ कांस्टेंट ऑफ दिस वेंचुरी ट्यूब। तो कंपेयरिंग इट विद द ओरिफिस प्लेट, ओरिफिस प्लेट का कंस्ट्रक्शन आपने देखा जो कि एक सिर्फ प्लेट है, दो फ्लेंज के बीच में, दो गैस्केट के बीच में हम लगा सकते हैं। तो एज सच कोई हमारे कंस्ट्रक्शन पे उसका इफेक्ट नहीं होगा, राइट। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे इतना सारा जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पोर्शन, यू कैन से, मतलब इतना तो जगह वो क्या करेगा वहां पे यूज करेगा। नाउ दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड विद दिस डिफरेंशियल प्रेशर मैकेनिज्म मेजरमेंट, जिसमें P1 एंड P2 माइनस होके जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के प्रेशर में, उसके अकॉर्डिंग वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ Q and Q is called as a discharge. Okay, the amount of volumetric flow. Okay, यहाँ तक सबको समझ में आया? So draw this diagram of Venturi tube meter और जिसका फ्लो हम इस तरह से भी विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, वेंचुरी ट्यूब के अंदर किस तरह से प्रेशर कम होता है, कैसे बढ़ता है, ये हम ये डायग्राम से पता कर सकते हैं। अगर आपको इसको और 3D में देखना है तो आई विल शो दैट टू यू। बिफोर दैट यू जस्ट ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक। P1 और P2 किस तरह से निकाले जाते हैं बाहर की तरफ से, मतलब किस तरह से आउटलेट हम उसे प्रोवाइड करते हैं वो देखते हैं। Draw this diagram in your notebook. When done, just type done in the chat box. तो जो हमने देखा अभी वो एक्चुअल रियल लाइफ में कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? इसको थोड़ा और विजुअल तरीके से देखते हैं हम लोग। ओके, so everyone just pay attention. The most diverse substances are transported and distributed in piping systems every single day. They can include solvents and chemicals, oil and gas, or steam for energy transmission.
The fluids flowing through pipes often have completely different properties. Therefore, different principles for their measurement are required. One method is flow measurement, based on the differential pressure principle. Some 300 years ago, Swiss mathematician and physicist Daniel Bernoulli discovered the direct relationship between the pressure and speed of a fluid flowing in a pipe. Italian physicist Giovanni Battista Venturi also performed experiments on flow, and in 1797 he built the first flow meter for closed pipes, known as the Venturi tube. Here is how this measurement method works. Differential pressure flow meters have an artificial restriction integrated into the measuring tube, illustrated here by the example of an orifice plate. Two holes are located in the pipe wall, one before and one after the orifice plate. Two separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor with its two pressure chambers, separated by a diaphragm. The tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the orifice plate is essentially identical. As soon as the fluid starts to flow, its velocity around the orifice plate increases significantly because of the restriction in the cross-section. At the same time, due to the laws of fluid mechanics, the static pressure at this point decreases. Consequently, different values are detected in the pressure chambers of the sensor, a higher pressure before and a lower pressure after the orifice plate. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity, and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity, and the resulting drop in pressure around the orifice plate, the greater the differential pressure measured. In numerous industrial applications, the orifice plate covers many needs of flow measurement technology. However, other designs are available for certain measuring tasks to minimize undesired effects, such as excessive pressure loss or abrasion of components due to solids carried in the fluid. This demonstration shows that an abrupt restriction generates severe turbulence in a fluid. Nozzles with a rounded, funnel-like inlet clearly reduce turbulence and thus create less pressure loss. Nozzles are particularly suitable to higher flow velocities or to fluids with abrasive solid particles. Turbulence reduction is even greater with Venturi nozzles, and finally with Venturi tubes, where the restriction is created by longer conical constrictions in the pipe wall. All these designs can be supplied with different restriction diameter sizes, so that the pressure loss and the differential pressure generated can be optimized for the process conditions. Industrial flow measurement using differential pressure has been tried and tested in numerous applications worldwide for about 100 years. With this measuring principle, all liquids, gases, or steam can be measured, even at extremely high process pressures and temperatures. Every differential pressure flow meter manufactured by Endress and Hauser is configured to customer specifications and pre-mounted. For all applications, we have the right solution. Endress and Hauser, your single source supplier for measurement technology. The differential flow meter is the most common device for measuring fluid flow through pipes. Flow rates and pressure differential of fluids such as gases, vapors, and liquids are explored using the orifice plate flow meter. The differential flow meter, whether Venturi tube, flow nozzle, or orifice plate style, is an inline instrument that is installed between two pipe flanges. The orifice plate of the flow meter is comprised of a circular metal disc with a specific hole diameter that reduces the fluid flow in the pipe. Pressure taps are added on each side of the orifice plate to measure the pressure differential.
According to the laws of conservation of energy, the fluid entering the pipe must equal the mass leaving the pipe during the same period of time. The velocity of the fluid leaving the orifice is greater than the velocity of the fluid entering the orifice. Applying Bernoulli's principle, the increased fluid velocity results in a decrease in pressure. As the fluid flow rate increases through the pipe, back pressure on the incoming side increases due to the restriction of flow created by the orifice plate. The pressure of the fluid at the downstream side of the orifice plate is less than the incoming side due to the accelerated flow. With a known differential pressure and velocity of the fluid, the volumetric flow rate can be determined. The flow rate, Q, of a fluid through an orifice plate increases in proportion to the square root of the pressure difference on each side multiplied by the K factor. For example, if the differential pressure increases by 14 psi with a K factor of 1, the flow rate is increased by 3.74. The most diverse substances are transported and distributed in piping systems every single day. They can include solvents and chemicals, vegetable oils in the food sector, coolants in primary industry, or petrochemical products. The fluids flowing through pipes often have completely different properties. Therefore, different principles are required for their measurement. One principle is flow measurement based on the differential transit time method, using ultrasound. The basic physics of this principle can be traced back to the English physicist and Nobel Prize winner Lord Rayleigh. His book on the theory of sound, published in 1877, describes the propagation of sound waves in solids and gases. Here is how this measurement method works. Inside the ultrasonic flow meter, pairs of sensors are fitted across from each other in the measuring tube. Each sensor can alternately transmit and receive an ultrasonic signal. Simultaneously, the transit times of these signals are measured. The ultrasonic signals are generated with piezoelectric crystals applying a voltage. Conversely, a piezoelectric crystal creates a voltage when an ultrasonic signal impacts the sensor. By increasing the number of sensor pairs, it's possible to accurately detect and mathematically compensate for flow profile distortions over the entire pipe cross-section. When there is no flow, the signal transit times are the same, upstream and downstream. Once the fluid starts to flow in the measuring tube, the ultrasonic signals are accelerated in the direction of the flow and decelerated against the flow. As a result, the ultrasonic signals now have different transit times, less time in the direction of flow, and more time against the flow. Therefore, the differential transit time measured by the sensors is directly proportional to the flow velocity in the pipe. Together with the known tube cross-section, the actual flow volume can then be calculated. The greater the flow velocity, the greater the measured time difference between the two ultrasonic signals. For ultrasonic flow measurement, the sensors do not necessarily have to be fitted into the pipe wall. With a clamp-on system, for example, the sensors are fastened directly onto the outside of the pipe. They can be retrofitted at any time without interrupting the process. With clamp-on sensors, the ultrasonic signal is passed directly through the pipe wall and into the fluid. The signal continues through the fluid, is reflected on the opposite pipe wall, and then measured by the second sensor.